Hello everyone. So this is second video where I'm reviewing a book, and the book is The Subtle Art of Not Giving Up. Guys. I just have read half of the book, and if you are like me, a lazy person, then you should really read this book because it gives you the harsh truth. And the author, which is he is a panda in this book, and he tells you the harsh truth of life. So first chapter you will find title is Don't Try, in which he talked about a person who is the alcoholic and very uh, lazy kind of person, but eventually in the end he became successful without even trying. And in second chapter he is talking about happiness is a problem. So we know that happiness is a problem, हमारी हो या दूसरों की हो. तो yeah. And in third chapter he is like, not in a third chapter, but the third thing I want to talk about, he is talking about a prince, and who became a monk. And I know you will guess the story. इसमें क्या होता है कि जो राजा होता है वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जो किंगडम होता है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बना देता है, जिससे कि जो प्रिंस होता है ही डजंट इवन नो द रियलिटी ऑफ आउटसाइड द वर्ल्ड. एंड वन डे वो डिसाइड करता है कि वो बाहर जाके चोरी छुपे देखेगा कि क्या होता है. देन ही रियलाइज दैट देयर इज़ अ मिस्ट्री, like people are sleeping in a road, and they doesn't have anything luxurious जो कि उसके पास होता है. देन अगेन अगले दिन वो फिर डिसाइड करता है कि दैट ही विल रन अवे, एंड ही विल check out it again. And then he never came back. He just like he tries those thing, and he thought that इसके पीछे कोई मिस्ट्री हो सकती है. एंड दिन बीतते जाते हैं, बट वो अपने किंगडम में आता ही नहीं है. और एक दिन उसको क्या लगता है कि मतलब लाइक ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट इसके पीछे कोई मिस्ट्री नहीं है. देन ही डिसाइडेड वन डे सिट डाउन इन अंडर द ट्री, एंड फॉर लाइक 49 days ही इज सिटिंग ऑन अंडर द ट्री. like you can imagine. And I think you guess it out कि वो monk कौन होता है जो बनता है आगे जाके. And in next I want to talk about that there is a story of Mark in this book also. And like when you read it out, then in the end you will think like he is a very innocent guy in his 20s or in his teenager. But when you see the twist, then you will get it like no. So इसमें क्या होता है कि मतलब जो एक दिन क्या होता है, उसका टेस्ट हो रहा होता है. देन द प्रिंसिपल केम इनटू द क्लास and tell Mark to come into his office. And then he shut down all the blinds. And उसके बाद वो उसका बैग चेक करना लगता है, इधर उधर फेंकता है सारी चीज़ें, तो उसको कुछ नहीं मिलता. उसका लॉकर भी चेक किया जाता है, बट देन ही डिडंट फाइंड एनीथिंग. एंड तब मार्क ने बहुत लाइक वो हो जाता है, लाइक बहुत कॉन्शियस हो जाता है, बहुत स्केर्ड हो जाता है कि प्रिंसिपल ने उसको क्यों बुलाया. देन प्रिंसिपल उससे पूछता है कि ड्रग्स कहाँ रखे गए हैं. तो मार्क को बहुत ही लाइक वो बहुत ही टेंस हो जाता है, और उसको समझ नहीं आता वो क्या बोले, कुछ नहीं. तो वो बोलता है कि मैं ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करता. बट देन प्रिंसिपल बोलता है कि मुझे पता है, एंड आई नो वट यू आर डूइंग, एंड जस्ट टेल मी वेयर यू केप्ट द ड्रग्स. देन यू आर फ्री टू गो, एंड तुम्हें इतना कोई नुकसान नहीं होगा. देन अगेन वो कुछ नहीं बताता है प्रिंसिपल को. फिर एट वन मोमेंट प्रिंसिपल सोचता है कि ठीक है, नहीं होगा आज जिसके पास शायद, तो वो एकदम से बैग को फेंक देता है. देन सडनली उसको बैग में कुछ एकदम से उसके पैर के नीचे कुछ आता है. मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी, देन ट्विस्ट खत्म हो जाएगा. देन यू हैव टू रीड इट आउट. एंड देयर आर सम like quotes in this book which is very good. I wanted to tell you guys. The first is one second. The first is, yeah, the more you desperate want to be rich, the more poor and unworthy you feel, regardless of how much money you actually make.
एंड दैट इज़ अ रियलिटी. अगर आप लाइक मनी के पीछे भागोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा. जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में सुना कि मतलब एक आदमी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया विदाउट इवन ट्राइंग. सो दिस इज द कोट अबाउट. सेकेंड कोट इज, yeah, then he talk about happiness comes from solving problems. In this, he is telling that problems never stops, they merely get exchanged and are upgraded. We know that. Next is the quote is, next quote is in, yeah, technology has solved old economic problems by giving us new psychological problems. The internet has not just open source information, it has also open source insecurities, self doubt, and shame. So that is also, I agree that, yeah, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा लाइक लोगों को इनसिक्योरिटी होती जा रही है. क्योंकि लाइक आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं कि लाइक वहाँ पे इतने सारे लोग हैं और इतना मतलब लाइक फ़िल्टर लगा के, तो लाइक सामने वाले को लगता है कि वाओ इसकी स्किन कितनी अच्छी है, इसका लाइक इसकी बाल कितने अच्छे हैं, बट हमें उस चीज़ से इनसिक्योरिटी होती है. सो आई हाईली रिकमेंड यू टू रीड दिस बुक. अभी तो मैंने जस्ट आधी पढ़ी है एंड हाफ ऑफ द बुक विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी एंड बाय.